Good morning, team. Johnson Control Hitachi air conditioner aims for superior customer experience in partnership with delivery. It is positive for both delivery. Delivery is also a listed stock, Johnson Control. Data patterns. Now they have developed an equipment to check BrahMos missile function. So it is an automated thing. And the important criteria is, it was earlier costing 100 rupees, means today it will cost you only 30 rupees. So one third of the cost they are reducing. So this is going to be a huge saver. And BrahMos missile, almost 80% of the component are manufactured in India. Campus Activewear, TGB, to sell 7.62 stake worth of 800 in block today at 345 rupees. Arthur Industries signed an initial pact with Gujarat government to set up new manufacturing plant in Panoli, 1,000 crore worth of projects. VDL plans fifth dividend on 28th March. Important is, VDL received dividend from Hindustan Zinc. So if they have to pay to Vedanta Resources, which is their parent company, they have to pay. So that is what is happening. Bajaj Hindustan acquired two companies. One is Fenil Sugar and Bajaj Power Ventures for 800 crores. So yesterday we discussed about labor laws in many states. So one more news article which I found it very interesting. Foxconn deal has happened and Karnataka has got the deal, which is 8,000 crores. So every state government is fighting for deals, where investment will come, because it leads to more employment and more salary and more upliftment of poor. So what has happened is Karnataka has changed their labor laws to suit IT industry before. So they had 12-hour shift even in the night for all and nighttime work for women. So that benefited Karnataka to get the deal. Now Tamil Nadu also will be forced to do this restructuring or reform. So when every state reforms, that is very important. It is not about the central government. Every state government has to reform, and that reform process and competition has started. Now it is not only the southern state which are competing. There is MP and UP which is equally competing with the southern state. I think this is very positive for India as a whole. PNB Housing Finance has announced that they will consider fundraising through rights issue on 28th March. And after a new MD and CEO has taken over, we need to look at PNB Housing in a different angle. Foreign funds are interested in this deal. So I think this is a stock to watch for a long-term investor. IGL has declared a dividend of rupees 10. The stock is trading around 420 levels. It is very attractive dividend. INFI board directors have been reshuffled. Kiran Muzandar will now retire as an independent director. D. Sundaram has been approved. Wascon engineers have received a letter of agreement amounting to 158 crores from UP PWD, and it will be 18 months projects. HAL OFS has subscribed, huge response to it. I think this stock will double in next 5 years. So this is when there is a OFS is the best time to buy, because you get it at a corrected price. I think this is something to watch out for. Tilak Nagar Industries, now they came on media yesterday, CNBC. It is there. We have posted in our Telegram channel also. They said FY24 revenue will be 1,300 crores. Margin will hover around 12 to 13%. Debt is currently at 180 to 190 crores. The company will become debt-free in next 12 to 18 months. Promoter holding is at 42%. And they said there is no more dilution. But we are not very positive on Tilak Nagar Industries. Cadila Pharma has committed 1,000 crore investment to expand and upgrade its existing facility in Gujarat. Company has signed a MOU to invest 1,000 crores in Gujarat over the next 3 years till 2025.
Canara Can Bank, no, they have a unit in Russia, so they have disinvested that the disinvestment in Commercial India Bank LLC Moscow, 40% stake they were holding, they have sold it at 121 crores and the money has been received. This is positive for Canara Bank. Som Distilleries informed trial production at a newly expanded facility in Bhopal plant. So about few months back, they announced the expansion and now they are saying it is on steam. Now, and government has received almost 52,300 crores as dividend. Their revised estimate of dividend alone was 43,000 crores. So it is a huge 22% higher than what they got. Now, traders from other state can now buy UP farm item on ENAM, Electric National Agriculture Market, without any registration. This is very positive for rural India. And in ENAM, Tamil Nadu has been one state which has been using it very aggressively. Now other state using it is very positive. Now the agriculture reform which the central wanted to do, this is happening through the online platform, which is very positive. And in a very interesting news, there is a case filed by Hikal promoters. The Hikal promoters now they are related to Baba Kalyani. Mrs. Suganta Hirimet is a sister of Baba Kalyani, and they want their state to be given to them as per the family agreement which has been filed in the High Court. So they are saying BF investment holds about 2.65% and Kalyani investment is holding 31.36%. In Hikal, they want that to be given to them as per the family agreement. So this will have no impact. The case has been filed few days before, because of which Bharat Forge is correcting. I don't think there is any negative for them. So Metro has demerged Fila business from Carvatax, which is very positive. They want to market Fila in a very big way. So for which this demerger will help them. So it will come under the control of Metro. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. हम इस कॉल को हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. जॉनसन हिताची ने कहा है कि वे एक सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस देना चाहते हैं. दिल्ली वेरी के साथ ये टाइप करेंगे और इससे आगे लिखे जाएंगे. सेकेंडली डेटा पैटर्न्स ने कहा कि उन्होंने एक डील साइन की है एक सेगमेंट के लिए, ब्रह्मोस के लिए, जो कि वो 100 जो पहले लगता था वो 30 में करेगा, 1/3 ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होगा और 80% उसमें मार्जिन पे रहेगा. सो ओवरऑल एक पॉजिटिव रहेगा डेटा पैटर्न्स के लिए. कैंपस टेक्नोलॉजी कैंपस वर्क फुटवेयर में एक ब्लॉक डील होने वाली. टीपीजी अपना स्टेक सेल करेगी. 7.62% रहेगा. 800 करोड़ के आसपास का ये ब्लॉक डील रहेगा. ईथर ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया. पनोली में अपना वो सेटअप करेंगे. 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट. वेदांता पे डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला. बेसिकली हिंदुस्तान से जो उन्हें फंड आए थे वो अभी डिविडेंड डिक्लेयर करके अपने पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर करना चाहेंगे. बजाज हिंदुस्तान ने फेनिल शुगर और बजाज पावर एक्वायर किए हैं 800 करोड़ के आसपास में. जैसे हम कल लेबर लॉस के बारे में बात कर रहे थे, फॉक्सकॉन ने डील साइन की है 8000 करोड़ के आसपास कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ. और ये बेसिकली अगर ये जैसे हम देख रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट के साथ बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट आगे अच्छी बढ़ती हुई दिखेगी. और बेसिकली जो पुअर पॉवर्टी लाइन वाले हैं पब्लिक, उनके लिए भी बेटरमेंट रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. ओवर लेबर लॉस में जो शिफ्ट हो रहा है ये बहुत अच्छा है. जो 12 आवर शिफ्ट है ये भी बहुत अच्छा स्टेप्स रहेगा. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से कहा कि वो फंड रेज करना चाहते हैं राइट इशू के थ्रू. 28 मार्च को उसके लिए बोर्ड बैठा होगी और उसमें भी फॉरेन फंड्स भी इंटरेस्टेड रहेंगे. आईजीएल ने 10 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है. 420 रुपीज का प्राइस है, तो नियर अबाउट 2.5% के आसपास का ये ईड हो जाता है. इन्फोसिस के बोर्ड में थोड़ा सा रीशफलिंग हुआ है. किरण मजुमदार शॉ जो थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और उसकी जगह टी सुंदरम जी अभी नए बोर्ड मेंबर बनेंगे. वास्कॉन इंजीनियर ने भी कहा कि उन्हें 150 रुपीज का उन्हें 150 करोड़ का उन्हें टाइप बना है. एचएल का ओएफएस हम देख रहे हैं कि अभी तक देखा जाए तो 4.5 टाइम्स ओवरसब्सक्राइब हो चुका है और गवर्नमेंट अभी शायद लगता है उन्हें जो ग्रीन शो ऑप्शन है वो भी वे यूज करना चाहेंगे. सो ओवरऑल देखेंगे तो एचएल यहाँ से हमें लगता है डबल हो सकता है. तो ओएफएस में हमें जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो बेनिफिशियली रहेगा और आगे फ्यूचर इसको देखो.
इसकी पोटेंशियल देखते हुए। तिलक नगर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो उसके एक मैनेजमेंट इंटरव्यू के लिए आया था FY24 में। देखा जाए 1300 करोड़ का उन्होंने कहा रेवेन्यू करेंगे, मार्जिन 12 to 13% के आसपास रह सकता है। डेट अगर देखा जाए तो 180 to 190 करोड़ के आसपास का है, और वे कह रहे हैं कि डेट फ्री हो सकते हैं अगले 12 से 18 महीने के लिए। प्रमोटर होल्डिंग वे कह रहे हैं 42% से ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे। कैडिला फार्मा भी इन्वेस्ट करना चाहिए गुजरात में, और एक्सपेंशन बेस्ड वो अगले 2025 तक करेंगे, और 1000 करोड़ के आसपास से वो इन्वेस्ट करेंगे। कनाडा बैंक की एक यूनिट थी मॉस्को में, जिनकी है थी मॉस्को की कमर्शियल बैंक के साथ, उन्होंने वो उसे डिसइन्वेस्ट किया, और वहाँ से जो फंड्स मिले हैं 121 करोड़ के आसपास तक, वो उन्होंने इंडिया में लेके आकर ओवरऑल लगे सेंट्रल डिपॉजिट हो जा सकता है। सो इंडस्ट्रीज ने कहा कि उन्होंने नई फैसिलिटी भोपाल में स्टार्ट की है, और वो फैसिलिटी बहुत ही फटाक से बहुत ही फास्ट उन्हें स्टीम में आ जाएगी। गवर्नमेंट ने जो डिविडेंड सोचा था, उन्हें लगा था 43,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड है, पर हम देख रहे हैं कि 52,300 करोड़ का डिविडेंड कलेक्शन हुआ है, तो ओवरऑल एस्टिमेट से हायर हुआ, 20 से 25% हमें जंप दिखते हुए दिखा है। ये नाम की जो फैसिलिटी थी बेसिकली, ये अभी यूपी के जो बाकी स्टेट्स के जो फार्मर या मर्चेंट्स है, वो यूपी से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तमिलनाडु उसमें सबसे आगे था, ई नाम में तो अभी बाकी स्टेट्स के आ रहे हैं। ई नाम से देखेंगे तो एग्रीकल्चर ओवरऑल एक लेवल प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ऑनलाइन के थ्रू ये काम हो सकता है। हिकाल ने भी केस फाइल किया है। बेसिकली फैमिली एग्रीमेंट है, जो कि बाबा कल्याणी की सिस्टर है सुनंदा किरमन। उन्होंने जो स्टेक होल्डर्स, उन्होंने कहा कि उनकी जो एग्रीमेंट थी वो उसके ऊपर था, उसी के चलते देख रहे हैं भारत पर में थोड़ी गिरावट आने लगी थी, बट ये इसके ऊपर स्टॉक के ऊपर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और इम्पैक्ट नहीं रहेगा। BF इंडस्ट्री में देखा जाए तो उनका 31% का स्टेक है, और सॉरी 2% का स्टेक है, और कल्याणी में 31% का स्टेक है फैमिली एग्रीमेंट के साथ। एथर इंडस्ट्रीज ने कहा कि कंपनी ने साइन किया है इनिशियल पैक्ट, जो कि गुजरात गवर्नमेंट का सेटअप करेगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि पनवेली साइट में रहेगा। इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ के आसपास तक रहेगा। रेलवे का सेगम ने कहा कि 4060 का जीवी करेंगे रचना कंस्ट्रक्शन के साथ, और RBI ने रिसीव मिला है, LOA मिला है। लेन का ये पेव शोल्डर रहेगा, साखर से लेके सेक्शन NH8 तक रहेगा गुजरात में। EPC मोड पे रहेगा, और 252 करोड़ का प्रोजेक्ट है। IRCTC ने एमओयू साइन किया है उत्तराखंड सिविल एविएशन के साथ। ये 5 years तक का साइन इन्होंने एग्रीमेंट किया कि जो हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग सर्विसेज है, जो कि केदारनाथ धाम के लिए रहेगी, वो इनकी वेबसाइट से वो कर सकते हैं। यूपिन को भी टेंटेटिव अप्रूवल मिला है USFDA से, जो कि मार्केट करेंगे ओपिथोलिक एसिडिक टैबलेट, एक जेनेरिक इक्विवेलेंट है ओसिलिवा टैबलेट, जो कि इनके फार्मा से मिला है। रिलायंस में देखा जाए पिरामल रियल्टी, जो कि पिरामल ग्रुप के यहाँ में, उन्होंने पार्टनर किया GOPP के साथ, और इंस्टॉलेशन ऑफ EV चार्जिंग स्टेशन रहेगा अक्रॉस जितने भी पिरामल के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे। और ये पार्टनरशिप उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड क्लास EV फैसिलिटी देंगे अक्रॉस मुंबई के प्रोजेक्ट्स में। और एक्सेंचर ने कहा कि एक्सेंचर के नंबर्स अगर देखेंगे तो ब्रॉडली डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे हैं इंडिया के साथ, जो कि 2.5% क्वार्टर क्वार्टर हेल्दी दिखे थे। बुक बिल भी हम देखेंगे तो 1.4x के टाइम की ग्रोथ दिखी थी। एक्सेंचर ने कहा कि वो 19,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं, उसमें से 50% जो एम्प्लॉयज है वो नॉन बिलेबल है, और नॉन बिलेबल है तो इम्पैक्ट उसमें कम रहेगा। और जो गाइडेंस उन्होंने उससे लोअर की, जो पहले 8 से 11% की, उसको 8 to 10% कर दिया। इसका बेसिक रीजन मेरा जो वीकनेस है वो BSF है, और कमर्शियल में वो आगे कंटिन्यू होते हुए रहेगी, बट इसके ओवरऑल रिजल्ट अच्छे तो सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा IT स्टॉक्स के लिए। अनुपम रसायन ने कहा, हाँ, अनुपम रसायन ने 984 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया है 6 years के लिए। एक लीडिंग जापानीज केमिकल कंपनी है, जो कि सप्लाई करे न्यू एज एडवांस इंटरमीडिएट लाइफ साइंस एक्टिव सेगमेंट के लिए। और ये कंपनी ने कहा कि वो 135 करोड़ का उन्हें ऑर्डर भी मिला है, जो कि जापानीज MNC से पहले भी इन्हें मिल चुका है। सो एक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इनका जो केपेक्स है 670 करोड़ के आसपास का, जो उन्हें जापानीज कंपनी कस्टमर जो आ गए हैं ऑन बोर्ड, इससे ये पाइपलाइन और सारे ऑर्डर्स पे आते हुए नहीं लग रहे, तो ओवरऑल टॉप ग्रोथ अच्छे से होती हुई दिख सकती है। DSW स्टील के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, इसे 65,000 करोड़ का जो उनका मेगा से प्रोजेक्ट था, जो कि प्रपोज किया था ओडिशा में, जो कि सस्पेंड कर दिया NGT ने। NGT के हिसाब से जो कि डेट्रीमेंटल एनवायरनमेंट के चलते, और जो उन्होंने एक्टिविस्ट ने पॉइंट आउट किया वाटर की सोर्स की वजह से रिवर सोर्स से होगा, वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड एरिया है। इसके चलते उन्हें अभी अपना प्रोजेक्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। कैपेबल था 13 मिलियन टन का स्टील पर आनाम का। कंपनी की सोर्सेज ये कहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ एनवायरमेंट एग्रीमेंट एक टेम्परेरी सेटबैक है, और ऐसे बॉटलनेक्स को वो बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट को हर्डल दे सकते हैं।
मारुति सुजुकी ने कहा कि वे अपनी प्राइस हाइक करना चाहेंगे मॉडल्स रेंज में जो कि अप्रैल में होगी और पार्शियली बेसिकली ऑफसेट करना चाहते हैं जो कि इन्फ्लेशन और रेगुलेटरी परफॉर्मेंस के चलते हुए हम देख रहे हैं बेसिकली बहुत सारी पैसेंजर व्हीकल कंपनीज और सीवी कंपनीज ने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स किए तो ये इन लाइन ही रहेगी मारुति के लिए भी ओवरऑल एक न्यूट्रल है technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that during the end of the day, there was a selling and market has now reacted to the 17,200 level and close at 17,076 level. So during the entire week, we have said that there would be a bounce back rate towards 17,200, 17,300. So with yesterday's day's high, we believe that 17,200 level has been tested. So now looking at the chart pattern, there was a base formation at 16,800 and we were expecting a pullback. So with today's session and yesterday's closing hour trade, we believe there is a probability the market might come close to 17,000 level. There were again with the stop loss of 16,800, one can look to initiate a long positions. So right now it's a sideways to corrective market for the maybe for the first half of the day. Coming close to 17,000 should be viewed as a buying opportunity, and the recent swing low, which is at 16,866, rounding up to 16,800, that should be as a stop loss for the long trades. The same with the Bank Nifty. Bank Nifty, we were watching for the 40,000 levels to be taken out. So as and when above 40,000, we had a view of 41,500 and much above. But again, in yesterday's session, the closes come at 39,600. During the intraday, there was an attempt when the Bank Nifty went all the way to 40,201. But in the closing, there was a profit booking and the Bank Nifty came lower. So now looking at the daily chart, I think Bank Nifty may come close to 39,000. So again, at close to 39,000, we need to review. And if the markets find support, then the stock specific buys can be seen at those levels. So for the day, it is a cautious view on a correction, Nifty correcting close to 17,000 and Bank Nifty correcting close to 39,000 should be viewed as a trading buys for the, again, the bounce back, because we believe that the larger trend for the Nifty is going to be within 16,500 to 17,500 level. So we are going to trade within this range. So anytime, whenever there is a decline in the market, stock specific buys with the small trading views can be initiated. Coming to derivatives data, this Nifty future has seen a short built up in yesterday's session to the tune of 2.9%, which was increase in share by 0.47 million share. The put call ratio there has been declined from 0.93 to 0.84. So that has added to the weakness. The major call writing was seen at 17,100 and 17,200. So that will act as a resistance. Lower side put writing was seen at 17,000 and 16,800. So that will act as a support. On the Bank Nifty, even the Bank Nifty, there was a short build up to the tune of 2.97%. The put call ratio from 0.91 has now declined to 0.74, which is also added to the little bit of weakness. The major call writing was seen as 40,000 strike price, so that is a resistance, and the put writing is seen as 39,600. So that will be a support. So net it is we'll maintain a cautious view for the day. There are specific buys. For example, ITC is something which is looking good on charts. DLF is also something one can track whenever there is a correction. ITC, DLF, Sun Pharma only for a trading view, it is looking positive on chart. So even to some extent, Sun Pharma can be viewed. And somebody who is wanted to take a long term, not exactly for a short to medium term view, can have a watch on Havels is what we see. Havels can see a breakout in the near term. So we'll right now we'll wait for some declines in the market close to 17,000 and 39,000. We should be taking a individual stock specific long. That is the view for the day. Thank you, and I'll hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Yeah, hi, good morning, team. So first starting with Maruti. So Maruti said it will increase the price of some of the cars to partially offset the impact of inflation. So overall, it is not a major positive because it's like a right passing on the cost pressures, nothing else. Already several automakers, including Tata Motors, Honda, and Hero Motor Corp, have already announced this kind of hikes.
Second on JSW Steel. So JSW Steel was about to set up 13 million ton steel plant in Odisha, but National Green Tribunal has suspended its projects, citing environmental issues for the same. So this is slightly negative for JSW. Then on Anupam Rasayan, so the company has signed a letter of intent worth nearly 1,000 crores over the next 6 years with a Japanese chemical company. So this will be like positive for the company. The way we look at it, this that the company already has announced 670 crores capex. So and then they've got this new order from Japanese customers. So overall positive. Then on IT stocks, so Accenture reported a healthy set of results yesterday, and they've also given a guidance of 8 to 10%, which is better given the uncertainty that exists. So sentimentally, this is positive, and we might see a positive reaction for IT stocks today. Then on banking sector, so long-term capital gains in debt mutual funds are set to go. One of the key amendment that happened in this budget was that is that taxation on capital gains of investors in debt funds which have 35% or less of their assets in asset management in equities will be at a slab level. So currently they have the debt mutual funds are taxed at 20% with indexation benefits. So this will have a positive impact on banks, as this will boost FD. So instead of debt mutual fund, a lot of people might shift their move towards FD. So that will improve the CASA of banks. Then Bharat Electronics and Kalpataru both have received orders worth 3,800 crores and 2,400 crores. So it is very positive for both these companies. And lastly on ABB, so ABB and Parason have collaborated to scale up sustainable packaging in India. So Parason, one of the largest manufacturer of pulp and paper globally, will help ABB in developing this kind of solutions. So this is very positive from a longer term perspective. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. So first update on Reliance. Piramal Realty and Real Estate arm of Piramal Group has partnered with GOBP. So for installation of EV charging station across its residential development, and the partnership is to provide world-class EV charging solution across Piramal's residential project in Mumbai. Next update on Lupin. The company has received tentative approval from the US FDA to market a obaticholic acidic tablet. So basically, generic equivalent to Ocliva tablets of Intercept the Pharmaceutical Inc. Then next update is ISCTC. ISCTC has a signed MOU with Uttarakhand Civil Aviation Development Authority for the period of 5 years for providing the helicopter ticket booking services to the Pilgrim Sri Kedarnath Dham on the behalf of USADA. The next update on HL, the government will exercise the green show option to sell additional 1.75% stake in this company, as the offer for sale was subscribed around 4.5 times its base size, and the issue will open for the retail investor on Friday, that is today. The next update on Rail Vikas Nigam, the 4060 GV Rachna Construction and RVNL has received a LOA letter of application for upgradation to 6-lane with the paved shoulder Shikej Changodar section NH 8A for Ahmedabad Bagodara Rajkot Road on EPS mode in Gujarat. The project cost is around 252.21 crore